Hello dear students, how are you all? I will hope you all are fine. I am Bhupender Verma, your science teacher. So dear students, today we are going to start third part of chapter class 10th acid, base and salts. In this part, we will discuss about pH concept and universal pH paper indicator concept and introduction about salts. So let's begin this part. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिक सॉल्यूशन ऑन पीएच स्केल। जो पीएच स्केल है उस पर एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नोइंग अबाउट पीएच स्केल। What is pH scale? A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale has been developed. देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो मेजर करता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। And this pH scale, P stands for German word potence, which means power, and letter H stands for hydrogen ion concentration. That means the pH word stands for power of hydrogen ion concentration, potence or power of hydrogen ion concentration. In 1909, Sorensen devised this pH scale. सन 1909 में सोरेंसन ने स्केल को डिवाइस किया और बनाया। Sorensen linked the H ion concentration of acidic and basic solution to the simple number 0 to 14. सोरेंसन ने क्या किया, जो H ion concentration है उनको सिंपल algebraic नंबर 0 से 14 के बीच में एक स्केल डेवलप किया between 0 to 14. According to Sorensen, the pH of the solution is inversely proportional to the hydrogen ion concentration. उसने कहा जो pH है वो inversely proportional है H ion concentration के, inversely proportional to hydrogen ion concentration. And another is a concept of POH. POH is the hydroxyl ion concentration based concept. POH is a concept of hydroxyl ion concentration based concept. Now, if what is the mean of this relation? If hydrogen ion concentration is increases, then the value of the pH is decreases. अगर H आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू मिनिमम होगी। जो pH स्केल है pH की वैल्यू क्या होगी, उस पर मिनिमम होगी। If the H ion concentration is decreases, then the value of the pH is increases and vice versa we say. See the pH scale beta. This is pH scale and the numbers are given from 0 to 14. There is a more H ion concentration and the pH value is minimum. There is a less H ion concentration, pH value is maximum. So that's why it show the relation with the H ion concentration. What is a strong acid? Strong acids are lies between 0 to 3 and weak acids are lies between 4 to 6 and 7 is a neutral. Strong weak bases approximate up to 10 and half and strong alkali or strong bases 10.5 to 14. pH value of acid and pH value of bases and neutral solution. Now decreasing OH ion concentration. This is another concept tell us OH ion concentration is decreases on right to left from 14 to 0. Now what is the conclusion we obtain from the pH scale? If pH is 7 then the solution is neutral. If pH is 7 then solution is neutral. At that time protonium ion concentration and hydroxyl ion concentration is equal. If pH is greater than 7 then basic solution and hydronium ion concentration is less than hydroxyl ion concentration. If pH is less than 7 then hydronium ion concentration is more than hydroxyl ion concentration and solution is acidic. Now next concept is logarithmic concept of pH scale. The pH scale is a logarithmic scale and increase or decrease an integer value changes concentration by tenfold. जैसे हम एक इंटीजर वैल्यू से दूसरी इंटीजर वैल्यू पे मूव करेंगे तो हमारे पास उसका 10 फोल्ड यानी 10 टाइम्स हो जाएगा। सपोज वी आर मूव फ्रॉम 2 to 0 then it is 10 into 10 100 times. This is the mean of 10 fold. For example, if pH is 10 times more than pH3 is 10 times more than pH4 and pH3 is 100 times more than pH5 and pH3 is 1000 times more than pH6. pH of concentrated hydrochloric acid is 0 and the pH of vinegar is 4. Then we conclude that hydrochloric acid is 10,000 times stronger than the vinegar. This is a mean of values of logarithmic scale of pH scale. Now pH value of some common substance. Remember this table. Hydrochloric acid concentrated 0, dilute hydrochloric acid 1, gastric juice
in stomach, that is hydrochloric acid in stomach 1.4, lemon juice 2.5, vinegar 4, tomato juice 4.1, coffee 5, soft drink 6, milk 6.5, pure water 7, and saliva before meal 7.4, after meal 5.8, blood 7.4, eggs 7.8, toothpaste 8, baking soda 8.5, washing soda 9, milk of magnesia 10.5, household ammonia 11.6, and dilute sodium hydroxide 13, and concentrated sodium hydroxide 14. Now questions is why प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. क्यों हमारा जो प्योर और डिस्टिल्ड वाटर ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है. वी ऑल नो दैट वाटर इज अ स्लाइटली आयोनाइज इनटू एच आयन एंड ओ एच आयन. वाटर जो है स्लाइटली आयोनाइज हो जाता है अपने आप में एच आयन और ओ एच आयन में. इन प्योर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन और प्रोटोनियम आयन, ये जो एच आयन से बना है प्रोटोनियम आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है. देन इट इज न्यूट्रल इन नेचर. Why the acid shows the acidic nature even hydroxyl ion present in it in dilution. जब dilute करते हैं तो H ion की the acidic nature of OH. Why the acid shows the acidic nature even hydroxyl concentration is also present in dilute acids. Dilute acid में हालांकि hydroxyl ion भी present होता है फिर भी वो acidic behave क्यों करता है. Why did not the acid show the basic nature even OH ion present in aqueous solution. Question's answer is we know that acids produce H ions when they dissolve in water, hence concentration of H ion in water increases. H ion concentration increase होने लगेगी. Here OH ion concentration from the water of ionization is less as compared to H ion concentration. So due to the more presence of H ion, they behave as acidic in nature. Similar question with the bases beta. Why the bases show the basic nature even H ion concentration from the ionization of water is present in aqueous solution or base. Why the bases do not show the acidic nature even H ion concentration is present in it in aqueous solution. We know that base produce the OH ion when they dissolve in water, hence concentration of OH ion in water increases. So here H ion concentration from ionization of water is less as compared to hydroxyl ion concentration, that is due to presence of more OH ion concentration they show basic nature. Now what is the effect of H ion concentration when acid is added to water. जब acid को water में add करते हैं तो H ion की concentration increase हो जाती है. What is effect of OH ion concentration when acid is added to water? OH ion concentration decreases. And what is effect of OH ion concentration when base is added to water? OH ion concentration increase and H ion concentration decrease. Next question is, you have a two solution A and B and the pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution becomes more H ion? The pH is less, has more H ion. So A has more H ion as compared to B. Which solution is acidic and which solution is basic? We all know that less than pH 7 is acidic, greater than pH 7 is basic. So 6 is acidic, 8 is basic. That is A and B. Solution A is how much stronger acid than pH 7. pH 7 से कितना stronger है? Solution A is 10 times stronger than pH 7. Solution B is how much stronger base than pH 7? 10 times stronger. Next is the concept of universal pH paper indicator. Next is the concept of universal pH paper indicator. Universal indicator is a mixture of the many different indication or dyes which gives the different colors at the different pH values of entire pH scale. ये क्या करता है, जो बनाते हैं इसे डिफरेंट डाइज से बनाया गया, जो डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट स्ट्रेंथ पे. ओरिजिनल यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ब्राउन कलर सॉल्यूशन एंड द कलर प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ पीएच सॉल्यूशन. पीएच को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है. इफ द गिव्स डार्क रेड देन 0, रेड 1, 2 पे भी रेड, 3 और 4 के बीच में ऑरेंज रेड और ऑरेंज देगा, 5 पे ऑरेंज येलो, 6 पे ग्रीनिश येलो और 7 पे ग्रीन, 8 पे ग्रीनिश ब्लू, 9 पे पीएच होगी तो ब्लू, 10 पीएच है तो नेवी ब्लू, 11 है तो पर्पल, 12 है तो डार्क पर्पल, 13 है, 14 है तो पर्पल कलर देगा डार्क. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग पीएच स्केल. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो रेड, दैट मीन्स पीएच 1. डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो पर्पल 14. एथेनोइक एसिड है येलो तो पीएच 3. जो इथेनोइक एसिड है एसिटिक एसिड है उसका दिखा रहा है येलो, ऑरेंज येलो या येलो एक ही बात है, तो उसकी पीएच रेयर कहाँ चली जाएगी, 3 या 4 के बीच में चली जाएगी. लेमन जूस ऑरेंज 2,
लेमन जूस का ऑरेंज दिखा रहा है और पीएच कितनी चली जाएगी, अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास चली जाएगी। देख सकते हैं जो ऑरेंज रेड होगा उसमें पीएच हमारी 2 के आसपास चली जाएगी। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्लू देगा, 7 पीएच के साथ 9 देगा और वीक बेस हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल एंड न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। pH plays the important role in everyday life. pH in our digestive system, indigestion, acidity, etc. Dilute hydrochloric acid produced in our stomach by the gastric glands help in digestion of food. Okay students, concept is importance of pH and neutralization in everyday life. We all know that pH plays important role in everyday life. First is pH in our digestive system, indigestion, acidity or irritation in stomach. When the more acid cause in our stomach, create in our stomach cause the irritation and acidity. Dilute hydrochloric acid produced in our stomach by gastric glands help in digestion of food. जो हमारी gastric gland है, stomach में जो glands present हैं, वो hydrochloric acid produce करती है that cause irritation and produce more acid. If this acid produced in a large amount cause the acidity, irritation and indigestion problem. When we eat the junk or spicy food, then the pH of the stomach changes, that is decreased, that means becomes more acidic. This condition is called indigestion. If it is not treated, cause the ulcers in stomach called peptic ulcer. अगर हम इसे टाइम से ट्रीट नहीं करते हैं तो हमारे स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, दैट इज कॉज पेप्टिक अल्सर्स. ट्रीटमेंट. When we suffering from the indigestion, to neutralize the pH of stomach, we take antacids. हम इसे ट्रीट करने के लिए क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, magnesium hydroxide, ENO, sodium bicarbonate, etc. we take. Next is pH change the cause of tooth decay and tooth cavity. When we eat food which is not in form of which is in a form of starch, a complex carbohydrate, it is react with the salivary amylase enzyme released by saliva convert into sugar. जैसे हम फूड को ईट करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, तो स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ salivary amylase enzyme released by saliva. After some time, the bacteria present in our mouth convert and break down this sugar into acid, and this acid react with the tooth enamel to cause the tooth decay and tooth cavities. Hence, the pH of mouth becomes acidic. हमारे मुंह की pH acidic हो जाती है. The pH of our mouth is acidic. That's why it's called cavities. Next is treatment. How to treat this problem? To neutralize the pH of mouth, we brushing the teeth after eating food because toothpaste contain base which neutralize the pH of mouth. टूथपेस्ट जो है बेसिक होते हैं दैट कंटेन बेस एंड न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ माउथ. एंड टूथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड is caring for tooth. Generally toothpaste contain water, aluminum hydroxide, calcium phosphate, calcium carbonate and fluoride, etc. Next concept is of pH is self defense by animals and plants through the chemical warfare. The many plants and animals protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating एसिड्स एंड बेस इनटू देयर स्किन. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपने जो दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, उनकी बॉडी की स्किन में क्या करते हैं, एसिड या बेस रिलीज करते हैं. फॉर एग्जांपल एंट स्टिंग कंटेन्स मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड विच इंजेक्ट इन अवर बॉडी कॉज द बर्निंग सेंसेशन और पेन. इट कैन बी न्यूट्रलाइज विद द हेल्प ऑफ रबिंग माइल्ड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कैलामाइन सॉल्यूशन दैट इज जिंक कार्बोनेट. बी स्टिंग ऑल्सो कंटेन मेथनोइक एसिड बट मोर अमाउंट देन एंट्स. एंट से ज़्यादा होता है इनमें. विच इंजेक्ट इन अवर बॉडी कॉज द इमेंस पेन. अचानक से तेज पेन होता है एंड स्वेलिंग आती है. इट कैन ऑल्सो ट्रीटेड और न्यूट्रलाइज विद द रबिंग माइल्ड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट. वेस्प स्टिंग कंटेन अल्कलाइन लिक्विड व्हेन इट इज इंजेक्टेड इन अवर बॉडी और स्किन कॉज द स्वेलिंग पेन एंड इरिटेशन. वेस्प होता है ततैया या जिसे आप टांटिया कहते हैं, वो क्या है हमारी बॉडी में बेस रिलीज करता है. एंड इट इज़ ट्रीटेड विद द रबिंग माइल्ड एसिड्स लाइक विनेगर वगैरह से हम ट्रीट इसे कर सकते हैं. नेटल प्लांट स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड. जो नेटल प्लांट है उसके स्टिंग क्या कंटेन करता है, फॉर्मिक एसिड. व्हेन दिस स्टिंग इंजेक्ट इन अवर स्किन कॉज द पेन एंड इरिटेशन. ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इरिटेशन और पेन क्रिएट करता है. इट कैन बी ट्रीटेड टू न्यूट्रलाइज विद यूजिंग माइल्ड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट. नेटल प्लांट है जिसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. इसे डॉग प्लांट लीफ से भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि डॉग प्लांट जो है ऐसा प्लांट है जो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है और जो उसे ट्रीट कर सकता है और सेम दोनों सेम ही जगह पाए जाते हैं.
Next is plants and animals are sensitive to pH changes. Plants and animals are sensitive to pH changes in their environment. वो अपने environment के साथ pH के बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं. Soil pH and plant growth. The most of the plants are best grow in pH of the soil is close to 7. जब pH 7 होती है तो most of plant easily grow करते हैं. Due to the adding more fertilizer and chemicals into the soil, pH of soil becomes acidic and more basic. या तो acidic हो जाएगी या ज़्यादा basic हो जाएगी. To treat the pH of soil, if the soil becomes more acidic, then we neutralize with the organic manure. तब हम उसमें खाद ऐड करते हैं. If the soil becomes more acidic हो जाती है, then we add to neutralize the calcium hydroxide and calcium oxide and chalk. इन चीज़ों का यूज़ करके उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है. The pH change and survival of animals. pH plays the important role in survival of animals and human beings. Human body works well with the pH range of 7 to 7.8. एक नैरो pH रेंज में काम करती है. Aquatic animals also survive in this narrow pH range. If pH of the water decreases due to acidic rain of pH 5.6, then cause the death of aquatic animals. And to neutralize the pH of water, we add calcium carbonate into it. Okay students, I hope you understand this concept. Next is a concept of salt. A salt is compound formed from an acid and by replacement of the hydrogen in the acid by metal. We all know that acid metal reaction. Metal replace the hydrogen from it and form the salt. Salt is a general name and does not refer to the only sodium chloride. Salt is also formed when the acid react with base. Salt base के साथ acid की जब reaction होती है तब भी बनते हैं. Now we discuss some families of salts. Salts of hydrochloric acid are called chlorides. Salts of sulfuric acid are called sulfates. Salts of nitric acids are called nitrates. Salt of carbonic acid are called carbonates. Salt of acetic acid are known as acetates. Salt of formic acid are known as formates. Salts are ionic compound and they dissolved in water. They dissociate into their respective cations or anion. जैसे उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है वो अपने रिस्पेक्टिव केटायंस और एनायन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. लाइक सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. इसी तरह से कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन. Hence they work as a electrolyte when they are in aqueous state. वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इजिली. Then they are aqueous state or molten state. Some important salts and their formulas. I think you read these formulas and revise them and remember them. Formula of chlorides, formula of sulfates, and formula of nitrates, formula of carbonates, acetates, formates, etc. Now last concept of today's family of salts. The salts having the same positive ion or same negative ion belongs to the family of salts. जब दोनों के कैटायन और एनायन सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे तब वो क्या होंगे, एक फैमिली से बिलोंग करेंगे. लाइक NaCl कंटेन वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. सो सोडियम chloride belongs to one family, chloride family. Calcium and chlorine contain two positive and two negative, so it's also belong to chloride family. I hope students you understand this part. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.